अगर हम टेक्निकल एनालिसिस को देखें तो उसका इम्प्लीमेंट करने का मेन कारण, उसको स्टडी करने का मेन कारण जो मार्केट में है कि किसी भी स्टॉक्स में बहुत अच्छी तरीके से हम रिस्क असेसमेंट कर सके, बराबर टाइम पे एंट्री ले और बराबर टाइम पे एग्जिट ले। यानी एंट्री एग्जिट टाइमिंग के लिए हम टेक्निकल एनालिसिस का यूज करते हैं, लेकिन हमेशा जो एक्सपर्ट्स मार्केट में कहते हैं वो कहते हैं कि प्राइस एक्शन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि प्राइस एक्शन को समझना बहुत क्रिटिकल है मार्केट में। लेकिन चैलेंजेस क्या है कि एज अ न्यूबी जब हम मार्केट में आते हैं तो प्राइस एक्शन को समझने में टाइम लगता है, लेकिन तब तक अच्छे सेटअप्स तक कैसे पहुंचे, ये जो सवाल है उसका जवाब दे देते हैं इंडिकेटर्स। इन इंडिकेटर्स का यूज करके जो बेस बने होते हैं प्राइस एक्शन के ऊपर, वॉल्यूम के ऊपर और टाइम सीरीज के ऊपर, यानी मेन जो कोर डेटा आता है टेक्निकल एनालिसिस में किसी भी एक्सचेंज में, वो आता है प्राइस क्या था डील का, किस वॉल्यूम पे हुई थी और किस टाइम पे हुई थी। इनको जब आप कन्वर्ट करते हो अलग अलग इंडिकेटर्स में तो उनके यूज से धीरे धीरे करके हम अच्छे प्राइस एक्शन सेटअप्स की तरफ पहुंच जाते हैं। और अलग अलग तरीके के मार्केट में इंडिकेटर्स होते हैं, लेकिन एक इंडिकेटर है जब भी कोई नया आदमी स्क्रीन पे लगाता है ना उसको बहुत डर लगता है। देर इज वन इंडिकेटर इफ यू अप्लाई ऑन द स्क्रीन, इट लुक्स वेरी डेंजरस एंड इट लुक्स वेरी कॉम्प्लिकेटेड एंड people will start thinking that technical analysis is very very complicated. And you guessed it right, that indicator is Ichimoku Cloud indicator. तो आज हम बात करने वाले हैं इचिमोकू क्लाउड इंडिकेटर के बारे में। इसके कंपोनेंट्स क्या हैं, इनके थ्रू हम किस तरीके से तीन तरीके के सेटअप्स देख सकते हैं। एक ट्रेंड फॉलोइंग के सेटअप्स कैसे देख सकते हैं, ब्रेकआउट मोमेंटम के सेटअप्स कैसे देख सकते हैं, बॉटम रिवर्सल्स के सेटअप्स कैसे देख सकते हैं। अब ये तीनों के तीनों सेटअप्स हम एक ही वीडियो में नहीं देखने वाले हैं। पहले हम कंसेप्ट समझेंगे और आज ट्रेंड फॉलोइंग रिलेटेड स्क्रैनर्स बनाएंगे। और अगर आपको ये सीरीज पसंद आ रही है तो डेफिनेटली कमेंट में मेंशन करिए कि आप ब्रेकआउट को भी स्टडी करना चाहते हैं थ्रू इचिमोकू, आप बॉटम रिवर्सल्स को भी स्टडी करना चाहते हैं थ्रू इचिमोकू। देन आई विल क्रिएट दोज वीडियोस बिकॉज आपका इंटरेस्ट आना बहुत जरूरी है। मैं हूं मिलिंद उपासनी, पिछले 25 साल के एक्सपीरियंस के साथ मार्केट में बेसिकली इन्वेस्टमेंट करता हूं। मेरी खुद की अप्रोच जो रहती है मार्केट में वो रहती है थ्रू इन्वेस्टमेंट प्लस इंट्राडे ऑप्शंस एज वेल एज द वीकली ऑप्शंस। लेकिन इस कोशिश के दौरान जो कुछ भी मैं इवॉल्व हुआ हूँ उसमें काफ़ी वक्त लग गया है। और मैं चाहता हूँ कि बाकी लोगों को, आप लोगों को जो मार्केट में शायद आज नए हैं, आज रास्ता ढूंढ रहे हैं किस तरीके से पैसा मैं सेफली बना सकूं, उनके लिए ये वक्त कम कर सकूं, इसके लिए ये इस चैनल की कोशिश है। राइट, तो आप आत्मनिर्भर निवेशक बने, यही मेरी कोशिश है। तो आगे आज का प्रोग्राम शुरू करते हैं मार्केट की चाल मिलिंद के साथ। Going ahead straight away with my declaration, I am a SEBI registered advisor and I have understood that markets are very, very risky, right? And to work in this market, I want you guys to learn, to gain from my experience and expedite your journey. So anywhere, whichever stocks that comes into these discussions, they are not at all an advisory. तो अगर हमारे आज के डिस्कशन में कुछ इंडिया रिलेटेड स्टॉक्स आते हैं या यूएस रिलेटेड भी स्टॉक्स आते हैं जो कि मैं एग्जांपल्स में लाने वाला हूं, उनको प्लीज बाय और सेल एडवाइस मत लीजिएगा। अपने आप को इंडिपेंडेंट बना के लिए कंसेप्ट को समझिए। स्कैनर्स में दे रहा हूँ, उन स्कैनर्स को खुद इंप्लीमेंट करिए और धीरे धीरे करके आपके अंदर वो शार्पनेस आ जाएगा जिसके थ्रू आप मार्केट में सक्सेसफुली काम कर सकते हैं। एज एन एडिशनल इंफॉर्मेशन आई एम ऑल्सो शेयरिंग कि आप किस किस जरियों के थ्रू you can approach the regulators in the market for any concerns that you are having based on anybody's fraudulent activities। अगर आप मार्केट के रेगुलेटर्स को अप्रोच करना चाहते हैं, so these are the references, please go ahead and stay aware about it, stay safe in the market। So let's come to our core discussion today, that is the Ichimoku Cloud। तो Ichimoku Cloud जो है, इसमें से Ichimoku का मतलब ही है वन लुक। वन लुक यानी एक ही बार अगर इस इंडिकेटर को हम चार्ट पे लगा दे तो हमेशा इमीडिएटली समझ में आ जाता है कि चार्ट में प्राइस में कितनी स्ट्रेंथ है, कितनी वीकनेसेस हैं, किस डायरेक्शन में ट्रेड्स लेने चाहिए, किस डायरेक्शन में ट्रेड्स अवॉइड करने चाहिए और कहाँ तक हमारे सक्सेस होने के चांसेस हैं। तो इस इंडिकेटर्स में अगर आप देखेंगे तो एक्चुअली 5 कंपोनेंट्स आते हैं और इन 5 कंपोनेंट्स के द्वारा आप पहचान सकते हो कि मार्केट में मोमेंटम पॉजिटिव है, नेगेटिव है या साइडवेज है। विद इन दैट मोमेंटम व्हाट ऑल आर दी आइडियल एंट्री पॉइंट्स, जहां से आप एक सेफ एंट्री करके
अच्छी पोजीशंस को लेकर के फिर एग्जिट्स तक भी ट्रेल कर सकते हैं। 5 कंपोनेंट्स होने के कारण ये इनपुट्स आपको वन लुक में मिल जाते हैं, बट एज वी डीप डाइव यू विल स्टार्ट गेटिंग द ग्रिप दैट though it is said one look, there is a bit of deep dive required, and maybe it is a journey of maturity. Once you go through that maturity, then you will be able to figure out that even with one look, this thing is working out for you. So वन लुक इंडिकेटर एक्चुअली कैसे डिजाइन किया हुआ है, फिर इन कंपोनेंट्स को कैसे हम अप्लाई कर सकते हैं वो देखेंगे, और बाद में हम इस बार स्क्रीनर बनाएंगे, स्कैनर बनाएंगे ऑन ट्रेडिंग व्यू। ओके, ट्रेडिंग व्यू पे मैं क्यों जा रहा हूँ, इसका मेन रीजन है कि एज पर द रेगुलेशंस वी आर नॉट सपोज टू डिस्कस अबाउट द लाइव प्राइसेस इन द इंडियन मार्केट्स, राइट। सो टिल द टाइम आई एम फिगरिंग आउट व्हाट इज द राइट वे टू डू इट, आज मैं आपको स्कैनर्स दिखाऊंगा जो करंट ले बेसिस पे आपको यूएस के चार्ट्स के स्टॉक्स दिखाएगा स्कैन करके, और एनालिसिस करने के लिए आप साथ में इंडियन चार्ट्स को भी बाद में उस स्कैनर को बदल करके खुद ब खुद देख सकते हैं। तो लेट्स गो टू द ट्रेडिंग व्यू फर्स्ट। तो ट्रेडिंग व्यू में जब भी आपको स्कैनर बनाना है तो टिपिकली हम चार्ट्स देखने के लिए आते हैं ट्रेडिंग व्यू में। गो टू द होम यहाँ से, और होम पे जाने के बाद गो टू द प्रोडक्ट्स। यू कैन गो टू द प्रोडक्ट्स एंड फ्रॉम द प्रोडक्ट्स नाउ यू कैन लुक फॉर द स्कैनर्स। तो ये प्रोडक्ट्स में आने के बाद यू विल गेट सुपर चार्ट, स्क्रीनर्स, स्क्रीनर्स पे स्टॉक्स पे जाइए, राइट। तो हम स्टॉक्स पे जाएंगे अभी, और यहाँ पे हमारा स्कैनर बनाएंगे। सो द स्कैनर दैट वी आर गोइंग टू मेक इज गोइंग टू बी अ फ्रेश वन। सो वी विल जस्ट क्रिएट अ न्यू स्कैन, राइट। और ये होने वाला है इचिमोकू के ऊपर। सो इचिमोकू ट्रेंड फॉलोइंग की टेक्निक आज हम देखेंगे। ओके, तो ट्रेंड एंट्रीज जो हैं वो आज हम देखेंगे हमारे आज के इस एपिसोड में, राइट। सो यहाँ पे हम क्या रखने वाले हैं, विल कंटिन्यू टू हैव द यूएस मार्केट ओवर हियर, एंड जनरली जब भी आप ट्रेडिंग व्यू स्कैनर्स में आते हैं तो आपको इचिमोकू राइटली अवेलेबल नहीं मिलने वाला है। तो जस्ट गो एंड ऐड दिस इंडिकेटर इचिमोकू क्लाउड, राइट। और इसके अलग अलग कंपोनेंट्स फिर यहाँ पे आपके लिए ऑफर किए गए हैं बेस्ड ऑन विच यू कैन स्कैन योर स्टॉक्स, राइट। तो कौन सा कंपोनेंट लेना है, तो वी विल बी टिपिकली स्टार्टिंग विद द बेस लाइन क्रॉसओवर, राइट, एंड दैट कैन बी एडेड एज अ फिल्टर ओवर हियर। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड ये कंपोनेंट्स क्या है। हमने यहाँ पे देखा ड्रॉप डाउन में बेस लाइन था, कन्वर्जन लाइन था, देन वी हैड लीडिंग स्पैन ए, लैगिंग स्पैन बी। ये सब कंपोनेंट्स क्या है उसको अगर ब्रीफली देखना है तो विल जस्ट गो टू दिस क्विक प्रेजेंटेशन। सो ये 5 कंपोनेंट्स आपको मिलेंगे। इनके जापानीज नेम जो है उनको प्रोनाउंस करने में डेफिनेटली देर इज अ चैलेंज, सो आई एम नॉट गोइंग टू टेक अप दोज, बट इन अवर कन्वर्सेशन वी विल जस्ट टॉक देयर इंग्लिश इक्विवेलेंट्स। तो सबसे पहला है टेंकेन सेन, दैट इज कंसिडर्ड एज द कन्वर्जन लाइन। तो इस कन्वर्जन लाइन को अगर मैं आपको ठीक से बताऊं ना, यू कैन ट्रीट इट एज समथिंग विच इज इक्वलेंट टू 20 MA। Okay, I'm just giving you a quick example so that you will be able to relate it quickly. What is this involved? तो इस कैलकुलेशन में जो टेंकेन सेन के आप एक्चुअली 9 पीरियड्स को प्रीवियस हिस्टोरिकल कैंडल्स को ऑब्जर्व करते हैं, और उनका हाईएस्ट हाई विद इन दोज 9 days, रिमेंबर नॉट द एवरेज ऑफ हाई, द हाईएस्ट हाई एंड द लोवेस्ट लो डिवाइडेड बाय 2। ये आपका 9 पीरियड का जब एवरेज आप निकालते हो देन दिस इज समथिंग विच कम्स आउट एज अ टेंकेन सेन लाइन। इसका हायर टाइम फ्रेम पे यानी ऑन द 26 पीरियड टाइम फ्रेम पे कैलकुलेशन किया जाता है विच इज कॉल्ड एज कीजुन सेन एज द बेस लाइन। तो इस बेस लाइन को बिहेवियर वाइज मैं समझता हूँ इट इज समथिंग इक्वल टू 50 SMA। ओके, I'm just telling you behavior wise, so don't compare really 50 with 26 and all that. Then you would have said हमको 26 यही में लेना चाहिए, लेकिन मैं जितना ऑब्जर्व कर रहा हूँ इसको, इसका बिहेवियर जो है आपको चार्ट पे वो उस तरीके का दिखेगा दैट इज इक्वल टू व्हाट है 50 SMA डज। सो इफ यू वुड हैव वॉच्ड माय मूविंग एवरेजेस प्रोग्राम को आपको मालूम है व्हाट आई कंसिडर एज 20 MA एंड व्हाट आई कंसिडर एज 50 MA, इनका क्या इंपैक्ट होता है ये समझने के लिए यू कैन हैव अ लुक एट माय मूविंग एवरेज वीडियोस, राइट। तो किजिन सेन में क्या कर रहे हैं, हम सेम कैलकुलेशन को ले रहे हैं लेकिन ओवर 26 days। तो एक सिंपल सी अंडरस्टैंडिंग आपके दिमाग में आनी चाहिए कि जैसे जैसे प्राइस के दिन आगे जाते हैं वैसे वैसे टेंकिन सेन जो है ये फास्ट मूव करता है। क्यों? क्योंकि ये सिर्फ 9 दिनों के एवरेज पे है, जबकि 50
जो है आपका 26 पीरियड का एवरेज लेकर के कीजून सेन बेस लाइन चल रहा है। तो सिंस इट इज लुकिंग एट अ हायर लेवल एवरेज, ये इसका जो कर्व है ना ये ज्यादा स्मूथ होता है। दिस इज रनिंग एट अ स्मूथर पेस, वाइल आपका जो टेंकेंसेन है ये फास्टर पेस से चल रहा है। तो इसमें लॉजिकली क्या होता है कि जब भी मार्केट में कुछ करेक्शन आएगा, आपको ये 9 MA की लाइन यानी कन्वर्जन लाइन पे इम्पैक्ट इसका इमीडिएटली दिखेगा और ये नीचे जाते हुए दिखेगी। वाइल लॉन्गर पीरियड एवरेज 26 डेज जो है ये स्लोली स्लोली करके बेंड होगा, राइट। और जब मार्केट में रिकवरी आएगी तो क्या होगा, जो आपका कन्वर्जन लाइन है दैट इज द टेंकेन सेन, ये फास्ट अपवर्ड मूव होगा। लेकिन बेस लाइन कीजून सेन ये अभी भी स्लो जा रहा है, तो आपको एक क्रॉसओवर दे देगा ये। तो अगर आपको ट्रेंडिंग मूव्स के लिए क्रॉसओवर्स चाहिए, यानी ट्रेंडिंग मूव चल रही है बट यू कैन नॉट एंटर एनी टाइम, राइट। जैसे मैंने कहा है कोई भी एवरेज चल रहा है, आप कहीं पे भी जाकर के जंप नहीं कर सकते वहां पे, क्योंकि वहां पे तो रिस्क है। मुझे मालूम है ये मोमेंटम पॉजिटिव है, मुझे मालूम है ये ट्रेंड भी पॉजिटिव है, लेकिन काफी स्ट्रेच्ड है। तो मैं क्या करूंगा, लेट द प्राइस कम नियर द एवरेज एंड बाउंस अप, राइट। तो इस पॉइंट को पकड़ने के लिए वेयर वी आर टेकिंग अ डिप एंड देन जंपिंग ऑफ, हम यहाँ पे यूज करते हैं कीजून सेन और टेंकेन सेन का। तो अगर आपको टेंकेन सेन का क्रॉसओवर मिलता है गोइंग अबव द कीजून सेन, देन इट इज अ साइन ऑफ अप ट्रेंड, राइट। दैट इज द साइन ऑफ अप ट्रेंड, यू आर गोइंग मूविंग अपवर्ड्स। वहीं पे अगर टेंकेन सेन आपको नीचे जाते हुए मिलेगा तो इसका मतलब है कि आप जाने वाले हो डाउन ट्रेंड में। तो टिपिकली टेक इट एज अ मूविंग एवरेज क्रॉसओवर। इफ 20 गोज बिलो 50 वी कॉल इट एज ओके, ट्रेंड इज वीकनिंग, वी आर टेकिंग अ डिप। बट अगर 2050 के ऊपर जाते हैं तो हम क्या कहते हैं, स्मॉलर हैज गॉन अबव द लॉन्गर पीरियड, सो दैट इज अ मोर अ साइन ऑफ पॉजिटिव मोमेंटम, right? So this is something which is coming out of a concept of moving average crossover. Is it exactly that? No, calculations अलग है बट concept सेम है। ये मैं आपको यहाँ पे impress करना चाहता हूँ ताकि you will be able to relate to it quickly। इस इंडिकेटर को समझने में मुझे खुद को टाइम लगा था, बट आई एम ट्राइंग टू क्रिएट easier examples for you so that you will be able to settle down with it very very easily। मैंने इस इंडिकेटर को आपको पहले ही चार्ट पे नहीं दिखाया है, क्योंकि दिखा देता तो माइंड ब्लॉक्स क्रिएट हो जाते थे, यू वुड हैव रेजिस्टेड टू स्टडी दिस इंडिकेटर। ओके, सो कीप थिंग्स इजी, वी आर गोइंग कंपोनेंट्स बाय कंपोनेंट्स। ओके, तो ये कंपोनेंट्स हो गए हैं जो हमको है ना स्मॉलर ड्यूरेशन पे मूविंग एवरेजेस क्रॉसओवर जैसी सिचुएशन से बताते हैं कि कहाँ पे देर इज अ डिप एंड कहाँ पे देर इज अ रिकवरी ऑन अ स्मॉलर time frame, right? Now whenever there is a dip and there is a recovery, if you are looking in terms of swings, what you try to see is that कि चलो शॉर्ट टर्म पीरियड में टाइम फ्रेम में क्रॉसओवर होकर के हम नीचे से ऊपर जा रहे हैं, लेकिन सेफ्टी के लिए टू मेक माई दिस स्विंग सक्सेसफुल क्या चाहिए मुझे, कि ओवरऑल ऑन अ लार्जर टाइम फ्रेम एम आई इन अ पॉजिटिव मोमेंटम, राइट, कमिंग फ्रॉम द मल्टीपल टाइम फ्रेम कंसेप्ट। अगर स्मॉलर टाइम फ्रेम पे आपको मोमेंटम निगेटिव से पॉजिटिव होते मिल रहा है, लेकिन ये निगेटिव से पॉजिटिव मिल रहा है आपको, लेकिन अगर वो लॉन्गर टाइम फ्रेम के निगेटिव मोमेंटम के अगेंस्ट जा रहा है तो देर इज अ चांस ऑफ फेलियर। गेटिंग द पॉइंट, राइट। तो हमको हायर टाइम फ्रेम पे भी चेक करना है कि आर वी इन अ पॉजिटिव मोमेंटम, सो दैट डिप आकर के अगर हम ऊपर जाएंगे तो चांसेस हैं कि कोई रेजिस्टेंस नहीं मिलेगा, नीचे से बिग डैडी का सपोर्ट आएगा एंड वी विल बी एबल टू स्टिल मूव अहेड, राइट। तो अगर आपको ये बिग डैडी सपोर्ट ढूंढना है, अगर आपको हायर टाइम फ्रेम पे आर वी इन अ पॉजिटिव मोमेंटम और इन अ नेगेटिव मोमेंटम, टू मेक श्योर दैट our probability of win is more whenever we are playing the trend changes or the swings, we will have to look at something which is called as the Ichimoku clouds। तो Ichimoku cloud जो बनते हैं वो एक्चुअली बनते हैं दो लाइंस के क्रॉसओवर से। वो कौन सी दो लाइन होती है, एक कही जाती है सेंक्वी स्पैन ए। तो सेंक्वी स्पैन ए या लीडिंग स्पैन ए कहा जाता है इसको। लीडिंग स्पैन ए का कैलकुलेशन क्या है, तो टेंकेन सेन और कीजून सेन का जो मेरा एवरेज है, अब इसको मैं 26 दिनों के लिए फॉरवर्ड प्रोजेक्ट करता हूँ। ठीक है, तो जो जो कुछ भी मेरी मूवमेंट हुई है पिछले 26 दिनों में उसको मैं फॉरवर्ड प्रोजेक्ट करता हूँ। ओके, तो ये मुझे बताता है कि आगे की तरफ मेरी प्रोबेबिलिटीज दिशा क्या हो सकती है, राइट। तो ये लीडिंग स्पैन ए हो जाता है। वैसा ही एक लीडिंग स्पैन बी है। अब लीडिंग स्पैन बी में क्या किया है हमने, यहाँ पे हमने पकड़ा है 26 पीरियड का एवरेज,
very smartly. This time what we have done with the same calculations, लेकिन like the Kijun Sen and Tenken Sen, आप देखोगे ये कैलकुलेशन अभी सेम है कीजून सेन और टेंकेन सेन जैसा, लेकिन इट इज कैलकुलेटेड ओवर 52 पीरियड। ओके, तो आपके पास तीन लेवल्स है, यहाँ पे कैलकुलेशन होता है 9 पे, यहाँ पे होता है 26 पे, और यहाँ होता है 52 पीरियड पे। सो दिस इज स्टिल अ बिगर टाइम फ्रेम, एवरेज काइंड ऑफ अ सेटअप। ओके, तो ये आपका हो जाता है लीडिंग स्पैन बी। नाउ लीडिंग स्पैन बी इज लुकिंग फॉर 52 पीरियड, लीडिंग स्पैन ए इज लुकिंग फॉर 26 पीरियड। ओके, दो कैलकुलेशंस आर बिट डिफरेंट, बट get to the understanding get to the understanding that overall time period consideration here is higher in B and lower in A। तो इसमें भी हम क्या एडवांटेज लेंगे, तो अगर आपका ए स्पैन जो है ये ऊपर है, ए स्पैन ये ऊपर है क्योंकि ये स्मॉलर पीरियड का स्पैन है, और बी स्पैन आपका अगर नीचे है, तो ये बन जाता है आपका पॉजिटिव मोमेंटम जोन। बिकॉज क्रॉसओवर्स में क्या बता रहा है, स्मॉलर टाइम फ्रेम इज अबव द लॉन्गर टाइम फ्रेम, और इसको पॉजिटिव मोमेंटम होने के लिए चार्ट पे डायग्रामेटिकली डिपिक्ट करने के लिए दिखाया जाता है एज अ ग्रीनर क्लाउड। दिस इज शोन एज अ ग्रीन क्लाउड। ये ग्रीन क्लाउड क्या दिखा रहा है कि ओवरऑल लॉन्गर पीरियड ड्यूरेशन से मेरा जो मोमेंटम है ये पॉजिटिव चल रहा है। थिंक अबाउट इट। तो नीचे से मुझे क्या मिल रहा है, यहाँ से पता चल रहा है कि मेरा जो मोमेंटम है वो ओवरऑल पॉजिटिव है। माय मोमेंटम इज ओवरऑल पॉजिटिव। सो लेट्स draw this cloud quickly so that understanding will be easier। तो दिस इज द ग्रीन क्लाउड। तो सोचिए अगर आपका ए स्पैन बी स्पैन के ऊपर है तो दिस इज अ ग्रीनर क्लाउड। दिस डिपिक्ट्स दैट द ओवरऑल मोमेंटम इज पॉजिटिव, एंड देन ऑन अ स्मॉलर टाइम फ्रेम व्हाट यू आर गोइंग टू ऑब्जर्व दैट योर टैंकेन दैट इज कन्वर्जन लाइन क्रॉसेस द बेस लाइन। सो ये आपकी बेस लाइन है और कन्वर्जन लाइन इसको क्रॉस कर रही है, तो वी आर गेटिंग अ अपवर्ड स्विंग एंड विद द सपोर्ट ऑफ क्लाउड, so our success rate is going to be higher। so simple सा स्कैन आपका क्या मिलेगा टू पिकअप पॉजिटिव ट्रेंड शिफ्ट्स, पॉजिटिव ट्रेंड स्विंग्स इज when your conversion line crosses the baseline while they are above the green cloud important पॉजिटिव मोमेंटम है, और शॉर्टर टाइम फ्रेम पे देर इज अ करेक्शन एंड अ शिफ्ट, यू गेट गुड स्विंग एंट्रीज, यू गेट गुड ट्रेंड फॉलोइंग एंट्रीज ऑन द पॉजिटिव साइड। वहीं पे इफ द मोमेंटम इज नेगेटिव क्या होगा, इफ द मोमेंटम इज नेगेटिव अब क्या होगा, योर ए स्पैन विल गो बिलो द बी स्पैन, क्योंकि बी स्पैन 52 दिनों का है और ए स्पैन 56 दिनों का है, तो स्मॉलर इज गोइंग बिलो द बिगर वन। सो दिस जोन नाउ बिकम्स प्रॉब्लमेटिक, ये जोन आपका हो जाता है प्रॉब्लमेटिक, एंड दैट इज व्हाट वी कॉल इट एज द रेड क्लाउड। This is the red cloud. Now, red cloud, what does it depicts? It depicts there is a negativity. The momentum is negative. Now, since I've sketched it below for your easier understanding, let me bring it upwards. So, समझने में थोड़ा easy हो जाएगा. So, we are having here again, for the clarity purpose, the cloud directions are reversed. Now, A, and this is the A. Now, a shorter time frame has gone below the longer time frame. So this creates negativity, and this negative momentum, how are we able to pick? We pick it through the color of the cloud. Now, since A is below B, this cloud is going to be negative. That is, there is a negative momentum. There is a whole bit of resistance that is depicted in this cloud. Okay, so there is a resistance depicted in this cloud, and below that, if you have a reverse kind of movement, that is your baseline is here, but your Tenken's in the conversion line goes below. Now, this is something is going to give you higher success rate because your temporary, the temporary rise that you had, it has corrected due to the resistance of this cloud, and it has started going downwards. So if you're playing on the negative side, if you're playing on the sell side scenarios जो हैं आपके ट्रेंड के, that will get satisfied here, and buy side scenarios will get satisfied over here. Getting it? So you have
Smaller time frame, that is 9 period as conversion line. Then you have a higher time frame, that is 26 period as a baseline. So 9 crossing base, you get a buy signal. Now overall momentum, how do you pick it up? Then you are having another 26 period average. If it is above the 52 period average, that is A is above B, that is your longer period momentum. So longer period momentum is positive over here, and your trend crossover tells you there is a dip that has gone and we are moving up. Yes, this becomes a very positive trending scenario, trend entry scenario, right? And similarly, when you are going for shorting the stocks, what should you do? Look for a red cloud above, and then there is a crossover of the Tenkan Sen going below the Kijun Sen, that is conversion line going below the baseline. Now, this is where you are going to get better bearish signals. Getting it? तो चार लाइनों का कंपोजिशन हमने समझा. Conversion line baseline gives us short term swings, and lagging span and leading span gives us longer term momentum direction. Okay, so longer term momentum direction positive, your swing is from low to high. Yes, this is where these four components will get used, right? There's a fifth component over here, which we call it as a Chiku span. Now, Chiku span is something which is kind of a trailing prices to behind. You will find it always behind the current prices. So typically it is considered that if your trailing price at any point, Chiku span gets above the price, slightly above it doesn't really create a big difference. But if it gets above the price, it tells you that there is a potential momentum coming ahead, right? So this is something which I personally do not use much, क्योंकि इसको scan नहीं कर सकते हो. I have worked on it on TradingView. I worked for it on your charting. कहीं पे भी Chiku span you do not get to scan, but visually what you typically you try to check is that if that is a bit above the current price, your chances of a faster momentum is much ahead over here. Okay, so this is something that you will be able to pick up when we really get onto the charts, right? So we have baseline, we have conversion line, we have A above B, which is a positive cloud, A below B, a negative cloud, and then a trailing price marker, that is the Chiku San, to help us figure out whether more momentum is ahead or not. Okay. When it comes to cloud, what all things you can conclude? Whenever it comes to the cloud, the things that you can conclude are typically of three types. Number one, if the cloud is green, the momentum is positive. If the cloud is red, the momentum is negative. Okay. Number two, whenever your price goes inside the cloud, it is a consolidation phase. Higher chances that you are going to consolidate. But if the price goes above the cloud, that is also positive cloud, higher chances that momentum is going to move upwards. But if the price goes below the cloud, higher chances that there is going to be a resistance. Okay, so cloud below the price support, cloud above the price is a resistance. Thicker the cloud, more is its strength in terms of resistance, more is its strength in terms of support. Got it? So color of cloud tells you positive, negative momentum. Size of cloud tells you strength in the momentum, bigger, stronger, or weaker. That thing you can figure out. And then price above the cloud is a momentum scenario, price below a cloud is a correction scenario, right? So this is something that you can even read through this presentation, whenever you get chance. But these are the critical points that you should remember about the cloud behavior. And these clouds defines, what do they define? The overall long-term momentum on the chart. And the short-term movements are something that get picked with the your Tinkinson, that is the conversion line and the baseline, right? So let's get on to the scanner. And we are trying to pick up now a scenario where we are going to define a positive momentum that is coming onto the chart, right? So I'll bring up some examples for you. तो अगर हमको इचिमोकू स्कैन को देखना है चार्ट्स पे, तो हम जाएंगे Bitcoin पे. I'm just trying to avoid as far as possible the Indian stocks so that you are understanding is also being made and I am also being compliant to be safe.
right? So just let me set it. Right. So now you are seeing this is the chart of IBIT, that is the ETF in US for the Bitcoin, and we are going to add an cloud, Ichimoku Cloud over here. So Ichimoku Cloud, if you want to add, go to the indicators and pick up this indicators Ichimoku Cloud. Okay. And we'll put it up onto the chart. And now this is something which looks crazy tough, right? इसको देख के ऐसा डर सा लगता है कि क्या हो रहा है यहाँ पे सडनली ये चार्ट बहुत ही डेंजरस लग रहा है ना, समझ में नहीं आ रहा है क्या चल रहा है यहाँ पे, राइट? तो इसका एक ब्रीफ मैं आपको देता हूँ, और ब्रीफ के लिए पहले हम कंपोनेंट्स देखते हैं, कहाँ पे कौन से कंपोनेंट्स है जो हमने डिस्कस किए थे। आपको डरना नहीं है, स्लोली स्लोली वी आर गोइंग टू काइंड ऑफ डीमिस्टिफाई दिस इंडिकेटर, राइट? तो सबसे पहले है ना, यहाँ पे आप देखोगे ये ग्रीन क्लाउड है, तो जब भी ग्रीन क्लाउड होगा तो ऊपर की लाइन है, इसको समझ लेना है, दिस इज द लीडिंग स्पैन ए है, और नीचे की जो लाइन है दैट इज योर लैगिंग स्पैन बी, राइट? इसका कैलकुलेशन आता है ओवर 26 पीरियड्स, इसका कैलकुलेशन आता है ओवर 52 पीरियड। सो वेन एवर शॉर्ट टर्म इज अबव लॉन्ग टर्म, we are in a obvious positive momentum. Similarly, in this scenario, if at this position you will see, since this is the red cloud, your lower line is the short-term average, that is the leading span A, 26 period, and the above line is your lagging span B, the 52 period. So again, short term is below long term. Now this makes it as a negative zone. Okay. So this tells you that prices below this are going to face resistance. If you work on the stock while the prices are below this zone, you are actually risking yourself. Okay. Now, this is about the clouds, two components we have covered. Now, this blue line, which you see is moving faster, this blue line which is moving faster is your conversion line, which is, I believe, the Tinkensen they call it. Again, I'll just quickly take you to the presentation. Yeah, this is something, the Tenkan Sen, right? Now the baseline is the Kijun Sen. So this brown line is the Kijun Sen. So this is the convergence. This is the baseline. That is the Kijun Sen. Again, the calculation conversion line is 9. This calculation is 26. So as far as you can relate to these numbers, the smaller going above bigger tells you the positive momentum. Smaller going below the larger tells you the negative momentum, right? तो ये चार कंपोनेंट्स मैंने आपको यहाँ पे दिखा दिए हैं कि आपको ग्रीन क्लाउड से पता क्या चलता है कि द स्टॉक इज इन पॉजिटिव मोमेंटम, any bet you have to take in the market at this point will be on the upside. Okay. Any bet that you will take when the cloud is green and prices is below that, your bet has to be on the downside. Okay. रेड क्लाउड के नीचे ही काम करेंगे तो पैसा बनेगा, ग्रीन क्लाउड के ऊपर काम करेंगे तो पैसा बनेगा। अगर प्राइसेस क्लाउड के बीच में घूम रही है तो ये इनडिसाइसिव फेज है, बेटर यू शुड अवॉइड देम। ओके, राइट। नाउ लेट्स लुक एट द चीकू स्पैन। तो चीकू स्पैन इज दिस वन। So if you really look at it, the fifth line, that is, we have the Chiku span, that is this particular indicator over here, this green line. तो अगर आप देखोगे ना, आज ये प्राइस के साथ मैच कर रही है यहाँ पे। इफ यू विल सी द प्राइसेस आर टिपिकली मोर और लेस मैच। इसको विजुअली डिसाइफर करना प्रैक्टिकली मुझे तो अब तक डिफिकल्ट रहा है, बट द अंडरस्टैंडिंग इज देयर दैट इफ द प्राइसेस मूव अप and your current price is actually here and the Chiku span is bit higher, that means more positivity is ahead. Your prices can see good breakout, right? So that is what is the use of Chiku span, right? And I'll just blow up this chart for a longer duration so you can realize यहाँ पे कैसा होता है। तो आपको दिखेगा, जैसे जैसे आप जाओगे इन चार्ट्स के ऊपर काम करोगे तो आपको दिखेगा कि जितना टाइम हम हरे क्लाउड के ऊपर जाते हैं वैसा बनता है, जितना टाइम हम क्लाउड्स के इर्द गिर्द घुमाते हैं साइडवेज चलता है। और टू गेट अ बेटर आइडिया, लेट मी ब्रिंग अप द चार्ट ऑफ एप्पल। अगेन आई एम unfortunately I'm bringing up all the US stocks here. Main reason is that to align with our compliance requirement. Okay. So this is the chart of Apple. So here you can observe in case of Apple,
whenever the prices go above the red cloud and the cloud becomes green, see the movement, they are very, very fast. So till the time your cloud below is a green and you are above, your movements, your rallies are very much possible. But the time comes when things go negative. So you get into the red cloud and prices start going below it. Now these are the places where you make money by selling. Okay. Now to make thing easier, what I will do, I'll remove certain components. Okay, तो typically चीकू सेन का कहीं यूज नहीं हो रहा है, तो we will just remove the lagging span, the चीकू span, and even the cloud you can remove here and keep their colors only. तो clouds की लाइन को मैंने निकाल दिया है लीडिंग स्पैन ए और बी, बट क्लाउड के कलर से पता चल रहा है कि what is the dynamic going between them, right? Now this becomes more easier to understand. Now you can observe over here. What is the current state in Apple stock? If you see, the current state in Apple stock is positive. हम पॉजिटिव मोमेंटम में हैं. ओके, पॉजिटिव मोमेंटम में होने के बाद आपको ये भी दिखेगा कि हमारा जो ब्लू कलर का लाइन है, दैट इज द कन्वर्जन लाइन इज अबव द बेस लाइन. तो ये फेज में आप देखेंगे जैसे ही ये क्रॉस ओवर हुआ है, आपके पैसे यहाँ पे बने हैं. Getting it? So in the positive zone, if you get the baseline crossing above the conversion line, sorry, conversion line crossing above the baseline, you get good rallies, right? What happens when you are having this crossover within the cloud? Typically, you are sideways, do not touch the stock. Now, when you are falling again, you will observe while we are falling, if the conversion line is below the baseline, you see there is a fast correction that is happening, right? So these are the periods whenever the cloud is red and the prices are lower. These are the periods where you are going to get trending moves on the sell side. And if the prices are above the green cloud and up, you are going to get the movements which are trending and positive. Okay, so this is how it has gone. Now, if I tell you one of the stocks which has rallied recently very well and then corrected also, keeping in view that we are just going to watch period which is, 3 months prior in the Indian stock market, we can look at the stocks which are have the movement 3 months before, right? So for that, I'll take you to the stock of Nasdaq. So Nasdaq में आप देखोगे what has happened. So we are in the month of 2025. So you can observe जब तक करेक्शन चल रहा था मार्च के महीने तक, यू कैन ऑब्जर्व द स्टॉक हैज बीन इन द करेक्शन मोड. जितना था रेड लाइन के नीचे था, सो देयर वर लॉसेस हैपनिंग बिकॉज द ओवरऑल मार्केट्स इटसेल्फ वर बेयरिश, राइट? बट व्हाट हैज हैपेंड बिफोर दैट इन द ईयर 2024, यहाँ पे आपको दिखेगा किस तरीके से बहुत अच्छे रिटर्न्स हमको यहाँ पे मिल सकते थे. आपको इंतजार क्या करना है कि प्राइस क्लाउड के ऊपर आ जाए और यहाँ पे आपको बेस का क्रॉसओवर मिले, जो कि यहाँ पे मिल गया था. सो योर एंट्री वुड हैव बीन एट अराउंड 1148. यहाँ पे आपकी एंट्री हो जाती थी. एंड इफ यू कंटिन्यू टू होल्ड थ्रू दिस स्पैन 1148, योर एग्जिट वुड हैव बीन एट 2535. सो that is 2x return you would have made over here, following the simple logic that you will enter whenever the conversion line crosses the your baseline above the cloud. Okay, once the cloud turns greener, it becomes much faster. So even if your cloud is red but you are above it, it is okay, that's fine. But above the cloud होना बहुत जरूरी है. वैसे ही सेल साइड पे जब करेक्शन आया, क्या हुआ? You went below the cloud. The moment you went below the cloud, there is negativity, and now here you get the lower crossover also, and see from there the things got corrected, right? So क्लाउड के ऊपर आते हैं तो पॉजिटिव मोमेंटम है, क्लाउड के नीचे जाते हैं तो निगेटिव मोमेंटम है. एंड विद इन दैट मोमेंटम, इफ यू आर लुकिंग फॉर एफिशिएंट स्विंग एंट्रीज, that is where you will be using the conversion line crossover with the baseline. Let's look at another stock as an example. So in this case, I'll bring up the stock of Persistent. So Persistent Systems has been running quite strong even when the market was correcting. Actually, main reason why, because they are more into the product side of the industry, right? So this is 2024. We can safely look at this data. तो यहाँ पे आप ऑब्जर्व करिएगा क्या हो रहा है. पहली बार प्राइस क्लाउड के ऊपर आई तो वी नो देर इज अ पॉजिटिव मोमेंटम. यू आर
Kijun Sen, sorry, your Tenkan Sen is above the Kijun Sen. So conversion line is our baseline. So momentum is positive. Trend is also positive. You get a nice strong move. Now here what happens? There is a correction. We exit the stock. But again, being above the green cloud, I get another crossover and see the profit journey that I am getting. So you can observe जब तक हम क्लाउड के ऊपर है पॉजिटिव रहना, अप ट्रेंड में काम करना, अपस्विंग में काम करना आपको पैसे देता है। जैसे ही क्लाउड के अंदर आते हैं चुपचाप बैठ जाओ, ज्यादा मत कुछ करो, और जैसे ही क्लाउड के नीचे जाते हैं अगेन इफ यू गेट द क्रॉस ओवर यू गेट दोज नेगेटिव मूव्स। गेटिंग इट? तो क्लाउड के ऊपर रहेंगे तो पैसा बनेगा, क्लाउड के नीचे जाएंगे तो पैसा लूज होगा। लेकिन पैसा बनते समय भी एफिशिएंट एंट्रीज चाहिए, तो डेफिनेटली कीप ऑन यूजिंग दिस क्रॉसओवर बिटवीन द बेस लाइन एंड द कन्वर्जन लाइन, राइट? सो लेट्स गो टू आवर स्क्रीनर। स्क्रीनर पे जाकर के अभी हम एक कंडीशन डालते हैं। इचिमोकू हमने ऐड किया था, तो लेट्स ऐड अ कंडीशन फॉर क्लाउड बीइंग पॉजिटिव। तो कंडीशन क्या होगी क्लाउड होने पॉजिटिव की? सो वी विल हैव द condition over here, span A is above leading span B। तो ये मेरा हो गया पहला कंडीशन कि मेरा क्लाउड जो है वो ग्रीन चल रहा है। ऐसा है क्या नहीं है? तो यहाँ पे आप किसी भी बहुत ही मोमेंटम में चल रहे हैं स्टॉक्स, तो इनको खोल करके हम क्विकली एक के बाद एक चेक कर लेते हैं। सो लेट्स लुक एट माइक्रोसॉफ्ट चार्ट। तो यू विल ऑब्जर्व यहाँ पे, अनफॉर्चुनेटली आई कैनॉट ब्रिंग अप द इंडियन मार्केट चार्ट्स फॉर द compliance reason, so trying to deal with the best alternative that I have. Okay, I hope you guys don't mind. So here we'll put the Ichimoku Cloud and you can observe what is happening here. Can you see here? The moment price is above the cloud, you are in the momentum and the race is going on, right? जब भी करेक्ट होता है क्लाउड के नीचे जाते हो, आपका जो कन्वर्जन लाइन है बेस लाइन के नीचे जाता है, तो यू स्टार्ट्स गेटिंग अ ब्रेक डाउन, right? So this is where today we are in the positive zone and you can see the manner in which the stocks have been rallying. Let's look at another gems in the US market, that is the Nvidia. Now Nvidia also you will observe the same behavior. अगेन एनवीडिया में भी आपको सेम ही चीज दिखेगी, आपका जो क्लाउड है वो ग्रीन है और इस ग्रीन क्लाउड के ऊपर आपकी प्राइस आज बनी हुई है। सो current state in the market for these stocks is that they are on the side of positive momentum, so they are in the way that they are rallying। so यहाँ पे अभी आपके पॉजिटिव मोमेंटम वाले स्टॉक्स जो है वो स्कैन होकर के आ रहे हैं। लेट्स लुक एट टेस्ला। So if you look at Tesla, you will observe यहाँ पे क्या हो रहा है। You are seeing the crowd is green, right? The crowd is green, but what is happening? The price is now within the crowd. तो ये तो हमको नहीं चलेगा, right? So this is something that we do not want to work with because that will typically mean we are in the sideways zone and about to get into the negative momentum. So we want to avoid this situation. तो इस situation को कैसे avoid करेंगे? तो in our scan, what we are going to put now, next condition again we'll add Ichimoku. Okay. So maybe we'll add the price, right? I will add the price first. So I think let's put the Ichimoku over here. Ichimoku Cloud. मेरा condition यहाँ पे क्या रहेगा? My Ichimoku Cloud. In this time, I am going to look at the span. My prices has to be above the cloud, right? Remember? So what I am going to take up it is that my leading span A, okay, right? Or leading span A is above leading span B. Okay, तो ये यहाँ पे हो गया मेरा लीडिंग स्पैन ए इज अबव लीडिंग स्पैन बी। तो आई विल हैव टू जस्ट चेंज नाउ दैट आई वांट दैट माय प्राइस इज अबव लीडिंग स्पैन ए। सो यहाँ पे व्हाट आई एम गोइंग टू डू, आई विल जस्ट पुट माय price over here. So this is going to change. So this is A, leading span A है यहाँ पे. So I want that A below is below my current price. So this is something that I'll have to take to my current price. Okay. So what is the scenario over here?
We look at this. I think I'll just clear it up. Let's have a fresh one quickly. The Ichimoku mein, my condition here is that I'm going to have a manual setup. That is my leading span A is below, right? The price. Going to have here the price. Okay. So now what is happening? Plan span A is above span B. So we are on a green cloud and my price is now above this cloud. So what will happen? Tesla is absent from here. So this is how we are filtering out the cases which we don't want to work, right? तो यहाँ पे बैंक ऑफ अमेरिका का चार्ट देख लेते हैं एज एन एग्जांपल. So we'll go to the super chart. So यहाँ पे we are watching the chart of Bank of America. Now Bank of America, what we want, the price has to be above the green cloud, right? So this is where we are. The price is running above the green cloud. So here we are, right? So price is above the green cloud. Your conversion is above the baseline. So we are in a positive momentum over here. This is something which is pretty good, right? So this is a typical scenario which I tell you in terms of moving averages. ये feel कैसा रहेगा कि your 9 is above 20 period moving average and both are above the 50 period moving average. That kind of a feel, this scan is going to get you with the stock. So all these stocks are in positive momentum and they are having their price above the green cloud. So green cloud is there plus price is above the green cloud. So these are all the stocks which are in positive momentum and in a positive trend. That is how we are moving, right? So here we are, right? So this is how our first criteria we are able to scan. Okay. अब मेरे को क्या चाहिए? I want to figure out that इस positive momentum में रहते हुए किन स्टॉक्स में आज डिप के बाद मेरे को एक एंट्री मिल रही है टू मूव अपवर्ड्स. सो मोमेंटम इज पॉजिटिव बट आई वांट टू फिगर आउट दैट पॉइंट ऑफ ईज वेयर देयर इज अ डिप इन द स्टॉक एंड आई एम एबल टू मूव अप फ्रॉम देयर. तो इसके लिए हम क्या करेंगे? वी आर गोइंग टू यूज द क्रॉसओवर बिटवीन द कन्वर्जन लाइन एंड द बेस लाइन. टिंकेन सेन और कीजुन सेन का क्रॉस ओवर हम यहाँ पे देखेंगे और हम क्या देखेंगे? पॉजिटिव क्रॉस ओवर. सो वील गो ओवर हियर एंड वील अगेन ऐड द crossover criteria. Again, take the Ichimoku Cloud here. Okay. इस बार हम क्या लेंगे? मेरा कन्वर्जन लाइन लेंगे और फिल्टर क्या ऐड करना है मुझे इस बार? फिल्टर ऐड करना है कन्वर्जन लाइन जो है क्रॉसेस डाउन बेस लाइन नहीं चाहिए मुझे. कन्वर्जन लाइन क्रॉसेस अबव बेस लाइन. सो दिस इज माय क्राइटेरिया. अब मुझे वो सब स्टॉक्स मिल रहे हैं जिनके अंदर आज जो पॉजिटिव मोमेंटम में भी है और वो एक क्रॉसओवर लेकर के एक डिप लेकर के ऊपर की तरफ जा रहे हैं. सो दिस इज गुड पॉइंट फॉर मी. माय स्कैनर इज प्रीटी मच सेट सो आई एम जस्ट गोइंग टू सेव इट, राइट? और एक ब्यूटीफुल यहाँ पे मालूम है आपके पास फंक्शनैलिटी है. इफ यू वांट यू कैन एक्टिवेट इट ओवर योर वॉच लिस्ट. जैसे ये मेरी वॉच लिस्ट है ना यूएस ईटीएफ वगैरह की, तो आई कैन ऑलवेज जस्ट पॉइंट दिस इंडाइसेस अगर मेरे पास है तो आई जस्ट कैन पॉइंट इट टुवर्ड्स इंडाइसेस. मुझे सिर्फ इंडाइसेस बता देना जिनके अंदर ये सिनारियो आज फुलफिल हो रहा है. कोई इंडाइसेस नहीं है, राइट? कोई मेरा ईटीएफ है क्या जिसके अंदर ये फुलफिल हो रहा है? आई कैन गो एंड लुक एट माई टाइगर वॉच लिस्ट. I can map it this scan on my snails watch list. So all these things I can do over here, right? नहीं करना है तो इसको सिर्फ सिंपल वॉच लिस्ट करके रखिए या इसको आप रीसेट करके छोड़ दीजिएगा. तो ये पूरे यूएस मार्केट के स्टॉक्स दे रहा है. तो चलिए एक एक करके आप वेरीफाई करते हैं कि स्टॉक्स जो आ रहे हैं हमारे स्कैन पे आर दे फुलफिलिंग द क्राइटेरिया फॉर विच वी आर स्कैनिंग, राइट? लेट्स लुक एट वॉलमार्ट. सो राइट क्लिक एंड हियर वी गो. Walmart super chart. Now, things what we want is that price is above the green cloud plus the Tinken Sen is crossing above the Kijun Sen, right? So यहाँ पे वो सिनेरियो बन रहा है क्या? देखिए आप, बन रहा है. Can you see this? Cloud है and we are right. और यहाँ पे आपको एक पैटर्न भी बनता हुआ दिख रहा है. और this is the beauties. At least we can talk about the US market on the current prices. So at least I can share that knowledge with you. You can see over here the beautiful pattern that is coming over here. All right. So yeah.
Would have loved to share this with on the Indian stock charts, but yeah, because of the compliance, we are not going to do that. But this is how it is. You're going to get similar setups even onto the side of Indian stocks. That is what I can tell you. Let's look at another good case. Let's look at John Deere. So again, super chart. Here we go. यहाँ पे भी आपको सेटअप कैसा लग रहा है देखते हैं। ये देखिए, ये भी ब्रेकआउट रेडी स्टॉक मिल गया आपको। एक्चुअली हम ढूंढ रहे हैं ट्रेंड लाइंस के लिए रेडी स्टॉक्स, बट मिल रहे हैं आपके ब्रेकआउट रेडी स्टॉक्स। सो स्लोली स्लोली यू कैन फिगर आउट दैट इज द पावर, दैट इज द पावर ऑफ दिस ब्यूटिफुल scanner coming out of Ichimoku Cloud. So the strength here, again, logically think the cloud tells me the overall momentum, and the crossover between conversion and baseline keeps on giving me the efficient point of entries when the stock swings low and still catches up above the momentum zone. So that is what beautifully we are able to pick it up from the Ichimoku scan. Now, since it was a breakout, let me quickly show you, if I can show you the impact of Chiku span. The Chiku span is something which is tells you whether the momentum is positive in the longer term also. On the way ahead, is the momentum going to be positive? So let's bring up the Chiku span. Okay, lagging span. This is the Chiku, right? Now here you can see. Now where is the Chiku span? Now this is what is real complicated. You can observe over here, the Chiku span is running here. Okay, and you see Chiku span is running above the price. This is the Chiku span and it is running bit above the price. Now this is the beauty. Now this is going to tell you that we are going to go up. That is what is the very thin difference is there, but that difference is there. You can use that to really get better bets in the market. Let me just remove the lagging span. So now we are here. Got it? So this was the application of lagging span, but both setups. This is Walmart, and this is something that you are getting out of the John Deere, right? Now here, if I want to put up the indicator, let me just remove this line for clarity. ये resistance line को निकाल देते हैं और इचिमोको में जा करके हम हमारे लैगिंग स्पैन को यानी चिकू स्पैन को एक्टिवेट कर देते हैं। आप देखिए अभी प्राइस जो है, can you see it is bit ahead यहाँ पे? So now this is telling me that okay, we are going to get a good move upwards from here. दिखने में कॉम्प्लिकेटेड है बट कंसेप्ट्स का आप समझेंगे ना। इन्होंने जो मोमेंटम है, मोमेंटम के अंदर डिप है, उस करेक्शन से ऊपर जाना है, सबको सब एक ही इंडिकेटर में डाल के रखा है। दैट्स व्हाई इट लुक्स कॉम्प्लिकेटेड। लेकिन यही सोचिए ना, आप सुपर ट्रेंड लगाते हैं, आप मूविंग एवरेजेस लगाते हैं, आप आरएसआई लगाते हैं, ये करके भी आप 3-4 इंडिकेटर लगाने ही वाले थे। दे हैव कवर्ड इट इनटू वन सिंगल इंडिकेटर। Right, now let's look at something more good that we can pick it up over here. Okay. I'm just trying to figure out any familiar name with which we can have a good case study. Okay. Let me just sort out the symbols so that name wise अगर मुझे कुछ अच्छा दिखता है तो quickly we can go to it. Now this is Amtech. Let's look at Amtech, right? Amtech and the super chart. Now Amtech का भी setup आपको दिखेगा। Now हाँ, this is what it is interesting. Amtech setup also is telling me the same thing, that you are above the cloud, you are having the smaller time span, the Tinken-sen crossing the Kijun-sen. So this is again giving you a nice breakout move that you can get. So you can observe the moment you are above the clouds, you get into positive momentum, your baseline, your conversion lines are trailing you, and their crossovers keep on giving you efficient point of entries for further trades for your positions, right? So this is something that, yeah, I wanted to cover. Unfortunately, we have to discuss more on the US stocks just to get you clarity, just to get you ease of it. Now, if you want to work on Indian stocks, simply what you have to do, go to the markets
and pick up India over here. So it will tell you all those stocks which are at the similar setups. So if I put it up over here, the scanner is giving all these names. So you can yourself go and watch their charts. I'm sure you'll find something which is happening very interesting over there. Right. So this was the first session that I've had with you on the uh, Ichimoku Cloud, and we have looked at really trend following setups, trend following setups that is onto the positive side. Now, if you want to look at scanners that we can build over here for the breakout setups, right? Or for the kind of real bottom fishing setups, definitely mention it into the comments of this particular video. I will again come back to you, right? So I'll be traveling through this weekend back to my own country, India, and from there I'll be getting in touch with you on a better time frame and in a better state of matters also, right? So I hope you have enjoyed today's session, though this subject is very complicated. People typically do not talk about it and try to kind of you know keep away from it because of its complexity, because of the kind of fear, the kind of reservation this whole setup creates. But I hope this whole session, the discussion that we have had now, has given you the clarity. Remember, basic things I will tell you, just remember four components. You can forget about the Chiku span, the lagging span, just forget it, right? Four things we have to remember. You have to remember the behavior of the conversion line. It is something like a 9 MA line, okay, or the 20 MA shorter moving average line. And then the baseline. The baseline is your Kijun Sen, the Tinken Sen, Kijun Sen. Tinken Sen is something which is like your 9 MA or a 20 MA, and Kijun Sen is something like your 50 MA. Now, whenever there is a cross between them, they tell you that there was a dip and we have moved up from there. Okay. Now, overall momentum coming from the longer time frame, going with the multi-time frame theory that Charles Dawes has given us. Based on that, the momentum on the longer time frame in case of Ichimoku is given by the leading span A and lagging span B. So whenever A is above B, you are in a positive momentum because A is 26 period consideration, B is 52 period consideration. So that tells you are in a positive momentum. So if you have a cloud which is green, you have the crossover that is coming from the conversion line and baseline, you are getting into a positive momentum from a corrective dip, right? Similarly, onto the sell sides, you can work. So if you're interested to look like on the sell side scanner also, I do not work much onto that. Definitely put it into the comments. And overall, this approach of really bringing up a new indicator to you and giving you an idea about how the various components of it has can be applied to get to the setups that we want in the market. Definitely mention your thumbs up in the comments. Your words, your good words are always the reasons why I'm floating into this sessions, right? So we will now connect into the next week, and during the week I'll be sharing with you what is the market weekly review. That is something that you will get as a gold member and a silver member, as well as fundamentally strong stocks that we'll be discussing with the gold members through this weekend. And in the next week, again, we'll connect with the new concepts as well as certain new scanners. If it all comes down from your side as Ichimoku breakout scanners, definitely we will work with it. Do give your feedback. Do keep on sharing your videos ahead, because the whole effort here is to make all you guys independent into the market. आप सबको आत्मनिर्भर बनाने की कोशिश है. इसमें अगर आप मुझे सफल बनाना चाहते तो डेफिनेटली सब्सक्राइब करिएगा चैनल को और आगे भी फॉरवर्ड करते रहिएगा. सो टेक केयर गाइस, हैव अ